Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain, and in this video I'll be talking about my positional stocks, like the stocks that I've filtered and which are actually based on my style of trading and where I filter stocks for breakout. Before that, I want to discuss today we have given Kirloskar Brothers. Look at the beautiful move. We entered somewhere, you know, somewhere here around 380 or so, and it made a high of 400, almost like 40 points in one go. We gave Newland Laboratory, we entered somewhere here 1840, and then it made a high of 1996. We entered into Fortis at about 292. This is a stock I gave for all the people who are joining me for the journey of 30k to 3 lakh. From 293 it went to straight 313. We gave Force Motors, which also gave a beautiful breakout. So these were our some of the stocks which we posted on our channel. ये सारे स्टॉक्स हमने अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं और लोगों ने जबरदस्त तरीके से पैसा बनाया. एक और स्टॉक हमने पोस्ट किया था किम्स हैज आल्सो गिवन एक्सट्रीमली गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो आज मैं आप लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर करने वाली हूँ और मेरा टाइम फ्रेम हमेशा वन डे होता है और मैं आपको पूरे रीजन के साथ बताऊंगी कि व्हाई एम आई गोइंग टू बी हैविंग दिस इन माय ऑन माय रडार. सो द फर्स्ट स्टॉक हमने ऑलरेडी ये दिवाली पे दे दिया है स्टॉक बीसीजी इज अ स्टॉक which I have given Brightcom Group. I have already given on Diwali, and today it has broken this trend line. So now it looks good, but you can keep it on your radar. Another stock that looks promising to me and that looks to be upcoming is CDSL. Why CDSL looks good? I'm sure I don't need to explain you all. आप लोगों को सबको पता है कि मुझे CDSL क्यों अच्छा लग रहा है. अगर आपको समझ आ रहा है ये स्टॉक तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सारे रीजंस, बिकॉज ये गलत बात है कि मैं आप लोगों को सब बताऊं और आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं इंटरप्रेट करें. तो मुझे जो दिख रही है इसमें मैं आपको बताती हूँ. मेरे को 1 2 3 4 चीजें मुझे दिख रही है. तो आई वुड लाइक यू पीपल टू राइट 4 थिंग्स दैट आई एम which I am looking at it and what you should also look at it. आप क्या देख रहे हो? वो 4 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है. आई विल अंडरस्टैंड देन दैट यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो CDSL मुझे अच्छा लग रहा है. कहाँ पे अच्छा लग रहा है? वी विल बाय इट अबव today's high, which is 1275. For a target is open, it could be 1300, 1354, 1400 till 1400. There should be no issue, and it can go up till 1450, 1500, and so on and so forth. So CDSL looks good. Then Power Mech, right? Power Mech, I will just explain it to you. What happened in Power Mech? The stock went up continuously. Stock went up. There was a huge volumes appeared in the stock went up, then some kind of profit booking. After that the stock has come to a support zone, right? This particular place is a very strong support zone and यहाँ पे stock आके horizontal हो गया है. अब अगर इस जगह को ब्रेक करता है स्टॉक तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें एक 2100 के टारगेट इसमें जरूर देखने को मिलेंगे. आज की डेट में स्टॉक कुछ ट्रेड कर रहा है 1800 के आसपास, 1700 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक. सो above this place, above 1885, I expect the breakout to be really solid, and a move till about 2090 can definitely be expected. So that is Power Mech. And then HFCL. HFCL is going to be top in my list, and the first entry is going to come above 80.3. And what could be my stop loss? My stop loss is going to be somewhere around 80, and target is going to be till about 100 rupees, right? I am expecting about 100 rupees in this particular stock. Broader time frame पे अगर आप इसको देखते हो तो एक कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है. एक शोल्डर ये बना, एक हेड एंड देन अनदर शोल्डर. सो दिस I'm sure should give a good move up above 85. We can definitely expect a target of 100 in this particular stock. Then I have SDBL, right? At this point of time आप देखोगे आपको कोई साइन नजर नहीं आएगा इसमें कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है. ये उसी तरह का स्टॉक है जो कि जेके लक्ष्मी जैसा जो मैंने आप लोगों को दिया था. जो जेके लक्ष्मी 560 पे दिया था और इसने 680 690 का हाई लगाया.
ये स्टॉक में भी इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर सिनेरियो बन रहा है. I am expecting it to give a very good breakout. और ब्रेकिंग आउट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिस स्टॉक टू क्रॉस अबव 115 और I would say 117 is going to be a very nice entry. 117.8 117 पॉइंट के बाद 8 के बाद आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें 130 तक का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट करते हैं एसडीबीएल में, और अगर 130 को ब्रेक कर देते हैं तो 150 के टारगेट कहीं नहीं गए. ओके, SDBL is looking very promising. Then comes JK Tyre. JK Tyre is again a very nice consolidation और continuous up move के बाद स्टॉक में क्या हो रहा है? एक कंसोलिडेशन हो रहा है. पहले अप मूव हुआ, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है. यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं इसको, कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया है, बट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट नहीं बुक किया. ये केवल रिटेल्स है जो बाहर निकल के आए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने इसमें और एंट्री ली है. अब अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हो रहा है, एक्सपेक्ट अगर ये स्टॉक 180 के ऊपर जाता है तो 200 का टारगेट तो कहीं गया नहीं है इसमें, और 200 के बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में होगा. आप इसमें अनदर 10% का मूव, मतलब 220 का टारगेट इजीली आप इसमें देख सकते हैं. और इस स्टॉक का नाम है जेके टायर्स. फिर नेक्स्ट स्टॉक है डीबी रियलिटी. डीबी रियलिटी मैंने एक बार दिया था और लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि नीचे चला गया, ये हो गया, वो हो गया. उसके बाद आप देखिए डीबी रियलिटी ने जबरदस्त मूव दिया है, सीधे 50 रुपए से लेके 139 का इसने स्ट्रेट अप मूव दिया. उसके बाद आके स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है और फिर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट जोन में खड़ा हुआ है स्टॉक. सो ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा? 115 116 के ऊपर, और टारगेट 140 इज कैन बी डेफिनेटली ऑन रडार. और 140 क्रॉस होने के बाद ये 150 160 170 के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं. लास्ट स्टॉक मेरा होगा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस. आप इसको देख के खुद भी समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है. स्टॉक में ग्रेजुअली प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ग्रेजुअली प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दिस इंडिकेट्स दैट स्टॉक इज इन अप ट्रेंड. एंड एक जगह आके लाइक समवेयर अराउंड दिस प्लेस 283 284, I'm expecting a good breakout to be coming up in this stock, and we will enter at 280 for a target of 300, or for 300 के बाद I feel that this is going to be in uncharted territory, so target of 330 340 350 can be easily seen. So I'm going to repeat my list again: BCG, CDSL, PowerMech, HFCL, SDBL, JK Tyre, DB Reality, and Arvind Smart Spaces. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stocks that I have filtered today after long research, and I'm expecting them to give good move. Keep them on your radar. We'll also be updating you on the Stock Pros channel, and I'm hoping that you all have joined me on my Telegram channel where we gave early morning force motor. I'll just show you. We gave you today's top gainers. We gave you Kirloskar Brothers, we gave you Newland Laboratories, we gave you Fortis, we gave you Force Motors. All of them have given beautiful move. So in case you haven't joined my Telegram channel, it's the right time for you to join it. Go to the YouTube channel, any of the YouTube video, go to the description box, click the link to join the channel. And if you can't join the correct channel, call up my team. The numbers are given there. Please do not search me on Telegram channel because there are many fake Telegram channels that are present. So keep these stocks on your radar and keep learning, keep earning. And now for the next 5-6 days, there won't be any videos of stocks because we will be in the Traders Carnival in Delhi, and I'm hoping to see you all, a lot of you over there. And in case you can't, I think you can look into the Money Control. They will be live streaming the entire conference. So all the best, take care, and see you in the next video. But do join me for the live trading from 10 to 11 every single day. Bye bye.